चलो डिस्कस करते हैं आज 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 गुड आफ्टरनून बच्चे। I think we have completed the chapter solution. आज हम नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और चैप्टर का नाम होगा कुएं की आवाज आ रही है बच्चों, बहुत अच्छी किसी के माइक से, और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, आप अपना माइक ऑन रख सकते हैं बच्चे। चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो बेसिकली जो डिवाइड है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट लॉ में है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हम इलेक्ट्रोलिसिस का पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या करते हैं, फेराडेज लॉ डिस्कस करते हैं। फेराडेज लॉ हम डिस्कस करेंगे बच्चे। दूसरा पार्ट होगा हमारा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का। कंडक्टिविटी बोल देता हूँ इसको, मीन्स कोई आयन्स है, ये दूसरा आयन है। एक आयन फास्ट मूव कर सकता है, ये स्लो मूव कर सकता है, डिपेंड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर मास, चार्ज डेंसिटी एटसेट्रा, देयर आर सेवरल फैक्टर। तो इस पार्ट में आयन्स कैसे मूव करेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट हमारा सेल का होगा, जिसके अंदर हम एक गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे, जिसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। और जनरली ये कॉपर और जिंक वाला सेल होगा। इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे ये काम करती है, या हाउ ए केमिकल रिएक्शन से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे होगा। और जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होगा इसके अंदर कॉमर्शियल सेल डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल सेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होगा आपका, एक हम पेंसिल सेल डिस्कस करेंगे। पेंसिल सेल जो मतलब हमारे रिमोट के अंदर लगती है, या फिर हम रेडियो वगैरह के अंदर यूज करते हैं। एक हम बटन सेल डिस्कस करेंगे। बटन सेल मतलब जो वॉचेस वगैरह के अंदर लगती है ना, एक छोटी सी ऐसी डब्बा सा, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा हम निकल कैडमियम सेल डिस्कस करेंगे। और एक हम बैटरी डिस्कस करेंगे। बैटरी मतलब जनरली जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, या जो कार की बैटरी होती है, वो डिस्कस करेंगे।
और एक हम फिर फ्यूल सेल डिस्कस करेंगे। फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली H2O2 सेल, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल का काम करेंगे वो। तो स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी? विजिबल नहीं है? नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, आपने मेरे को होस्ट बनाया था मैम, मैं तो इतना सारा लिख दिया। अ, एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। ये इतना लेट क्यों बोले फिर आप लोग? हाँ बच्चों, बच्चे या तो, कौन बोले? हाँ जी। यस सर, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। गुड। एस कावेरी, मिस्टर आशीष प्रो, अल्पना, मनीष, ओके, वेरी गुड। तो ये देखना। अच्छा, चेक बॉक्स में सर नॉट विजिबल सर, द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, यस सर, स्क्रीन इज विजिबल नाउ, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। ओके, बट यू टोल्ड मी दैट टू लेट ना, मतलब आपको तभी बोल देना चाहिए था सर ये स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, तो दोबारा से बोल देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होगा हमारा। इस चैप्टर के अंदर बच्चे बेसिकली हमारे चार कंसेप्ट होते हैं। एक हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जिसको हम फेराडे लॉ बोलते हैं। कंडक्टिविटी वाला पार्ट करेंगे, कोई आयन फास्ट मूव करेगा, कोई स्लो मूव करेगा, क्यों करेंगे भाई, कोई कैथोड पे पहले जाएगा, एनोड पे पहले जाएगा, कितनी आयंस की वजह से इस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी आएगी, वो वाला पार्ट, रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टिविटी कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, कार्ल राउच लॉ वगैरह इसी में आ जाएंगे। तीसरा सेल हम डिस्कस करेंगे, गैल्वेनिक सेल, जिसको कॉपर जिंक सेल भी बोलते हैं। और फोर्थ वन हम जिसमें नर्स इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट होता है हमारा कॉमर्शियल सेल, जिसमें एक तो हम पेंसिल सेल जो रिमोट में नहीं डलती छोटी छोटी, या फिर रेडियो में डलती है बड़ी बड़ी। दूसरा बटन सेल डिस्कस करेंगे। बटन सेल मतलब जो वॉच में छोटी छोटी सी ये डलती रहती है। एक निकल कैडमियम सेल डिस्कस करेंगे। बैटरी डिस्कस करेंगे इन्वर्टर वाली या कार की बैटरी। और फ्यूल सेल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। और फिर कुछ एक छोटा सा पार्ट होगा रस्टिंग, या जिसको मैसिलेनियस बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट होगा, वो डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी अब चैप्टर की समरी होगी। ये पार्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो मतलब आपको चैप्टर आता है। तो मेरे को ऐसा भी करना बच्चों, अगर क्वेश्चन यहाँ से ना हो रहा हो तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन कॉमर्शियल सेल से नहीं हुआ डिस्कस, फिर पूरे चैप्टर का हम प्लान करते हैं कि चलो ठीक है मेरा चैप्टर वीक है। नॉट अ चैप्टर वीक। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कंसेप्ट वीक है उसी पे काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें बच्चों पहले पॉइंट से। स्टार्ट करता हूँ। चलो समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन आपको यहीं पे रख लेता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry branch of chemistry
deals with the, इसके बीच में बच्चों स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इसको समझाता हूं मैं अच्छे से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है और फिर रिडॉक्स रिएक्शन, उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में यही ले लेता हूँ कि Zn रिएक्ट कर रहा है कॉपर प्लस 2 से, और ये कॉपर 2 में जा रहा है और Zn प्लस 2 में जा रहा है। ऑब्वियसली ये लॉस किया इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हुआ है। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉस और गेन है, ये जो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन if occurs through a wire, if occur through a wire, अगर ये एक वायर के थ्रू होगा, then current will flow in the wire ना। वायर के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, what we have done here, what we have done here, what we have done here, we convert chemical energy into electrical energy, chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बस। और कभी कभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो देर में बी देर इज ए रिलेशन बिटवीन, केमिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ बच्चे, मतलब जो रिएक्शन होगी उसको मैं करंट में कन्वर्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। or sometime with the help of electrical energy I will convert into the chemical energy। तो जो हमारे ये चार पार्ट है, चार पार्ट में जो अपना इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट था, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। और जो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट है, इसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हो गया। फिर तीसरा पार्ट कंडक्टिविटी वाला ढूंढ लेंगे कि भाई आयंस कैसे कैसे मूव करते हैं, और फोर्थ पार्ट कमर्शियल सेल हो जाएगा। तो चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है बच्चों। आज स्टार्टिंग से अगर समझ के चले तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। तो हम फेराडे लॉ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कुछ नहीं बताने वाला, डायरेक्ट इसका कंसेप्ट बताऊंगा और आपके क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा।
व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं बच्चे, electrolysis। ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है पहले इसको ध्यान से समझते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ, मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the decomposition of an electrolyte with the help of electricity, with the help of electricity through its molten state, through its molten, या फिर मैं एक्वस भी बोल सकता हूँ बच्चे, aqueous state is called इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ये होता क्या है। या फिर एक डेफिनेशन और दूं, एक डेफिनेशन और देख लो बच्चों, इससे कुछ आपको थोड़ा सा आपका जो कंटेंट है वो अगर इम्प्रूव हो जाए तो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurring at electrode, occurring at electrode when current is passed through, when current is passed through electrolyte, when current is passed through electrolyte solution, electrolyte solution is called electrolysis, is called electrolysis। ठीक है, समझते हैं बच्चे इसको क्या होता है। जैसे बेसिकली इसमें क्या होगा कि अपना एक कंटेनर होता है जनरली, इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और एक दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, और हम इन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चे बोलो। सपोज करो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाली चीज को मैं क्या बोलूं बच्चे, कैथोड या एनोड, और ये नेगेटिव वाली चीज को, और नेगेटिव वाली चीज को बोलो इसको कैथोड या एनोड बोलो। बोलो, कैन एनीबॉडी टेल मी, हम पॉजिटिव को क्या बोलते हैं। मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ बच्चों, कौन बच्चा बताएगा। चैट बॉक्स ओपन है बच्चे, चैट बॉक्स में आया हूँ, तो कोई भी बच्चा बताए कि पॉजिटिव को या क्या बोलते हैं, एनोड। सर प्लीज कैन यू टीच इन इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई विल ट्राई। ओके कावेरी, for you I'll explain in English also.
Okay, anode. Are you sure? Are you sure as that the positive is called anode? So here I'll write it anode, but anode is a place where oxidation is take place, and this negative is called cathode, and cathode is a place where reduction take place. जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं. एनोड इज ए प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कैथोड इज ए प्लेस ऑफ रिडक्शन. तो जनरली हम व्हेन वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू chemical energy, when we convert electrical energy to chemical energy, the positive plate is called anode. But if the opposite of this is there, we converting chemical energy into a electrical energy, the positive part is called cathode. तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है. सपोज यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूँ, नोट फॉर करंट प्रोड्यूसिंग सेल. फॉर करंट प्रोड्यूसिंग सेल, जो करंट प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं, करंट प्रोड्यूसिंग सेल, नेगेटिव इज एनोड एंड पॉजिटिव इज कैथोड. जो करंट देती है बच्चों हमें. और फॉर करंट कंज्यूमिंग सेल, फॉर करंट कंज्यूमिंग सेल, negative is cathode and positive is anode. ऑब्वियसली ये मैंने करंट प्रोड्यूस तो किया नहीं था यहाँ पे, ये तो मैंने बैटरी से अटैच की थी. तो whenever I am attaching this cell with the battery, it will consume the electricity. That's why cathode is here in positive and anode is in positive terms. But remember, what is exactly anode? Where oxidation take place. And what is reduction? What is cathode? Where reduction take place. So by this way, you can remember. Okay, obviously, एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोल्टन NaCl. मोल्टन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाएगा. जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड पर जाएगा. Na पॉजिटिव will go on the cathode side because it's negatively charged, and Cl will go to the anode. So how oxidation and reduction take place here? First, अगर यहाँ पे बच्चों कैथोड है तो कैथोड पे क्या हुआ है यहाँ पे? Basically, Na positive got one electron from the cathode. Cathode is negatively charged ना? Cathode negatively charged है तो Na positive goes to the cathode, got one electron from the cathode and from the Na. और ये जो Na है ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे बच्चे. Whereas in anode, two Cl negative will lose the electron. So for this we can write 2 Na positive, 2 electron and 2, because we are passing the same amount of electricity ना.
So electricity will reach on the both cathode and anode in same magnitude. 61983. Got it, बच्चों? So hope you got the cathode and anode. But what happen here? Na positive यहाँ पे deposit हो जाएगा and Cl negative will reach to the anode और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ना ये Cl गैस यहाँ से निकाल देगा इस तरीके से बच्चों. तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली देखो व्हाट हैपन हियर. बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट रहा है. आई एम एबल टू सेपरेट दिस Na positive and Cl negative with the help of this electricity. So here we are converting electrical current into electrical energy into chemical energy. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया. चलो जी, अब इसके कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि कौन कौन होते हैं जो यहाँ पे होता है. जैसे ये NaCl. This is NaCl is electrolyte. These two are electrode. And the process of converting electrical energy to chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर रहे हैं the process of converting electrical energy to chemical energy is called electrolysis. हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बच्चे जहाँ पे हमने ये सोडियम और Cl को सेपरेट कर दिया. अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं यहाँ पे. नाउ थिंक इसको लॉजिकली सोचना. सपोज दिस इज द कंटेनर and here one cathode is there, one anode is there. जैसे सपोज करो मैं इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे कर देते हैं. मैंने आई थिंक ये पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं नेगेटिव से कनेक्ट किया था. पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव हो गया आपका और ये नेगेटिव हो गया. पॉजिटिव को क्या बोलोगे आप? एनोड एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड. नाउ सिचुएशन क्या है यहाँ पे? Na पॉजिटिव है एंड H पॉजिटिव आल्सो देयर. हु विल goes the first? And here Cl negative also there and OH negative also there. Who will goes the first? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे Cl चला गया? Suppose water is also there, so water also break down into Ha positive and OH negative. तो
वाटर को ब्रेक डाउन होने के बाद में OH नेगेटिव आल्सो कैन गो टू द कैथोड फॉर द एनोड। उल्टा कर दिया मैंने। हाँ देखो, उल्टे साइन उल्टे लगा दिए। इनका साइन मुझे इस साइड लगाना था, और ये साइड लगाना था। तो for this we study a theory that is called preferential discharge theory। Preferential discharge theory। तो try to understand this one बच्चों। देखो, इसको यहाँ जाने Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव और OH, to reach at their respective electrode we need some potential। If there is a potential here, then only, if a particular potential is there, then only Cl negative or OH negative can reach there। If suppose if this potential is less than this particular potential, then OH negative and Cl negative never will reach on this electrode। Same happen with the Na positive and H positive। So first of all, we have to find out who will reach first। And दूसरा पॉइंट मेरे को ये पता चल गया, greater the discharge potential, greater the discharge potential, lesser will be tendency lesser will be the tendency to reach at their respective electrode, to reach at their respective, to reach at their respective electrode। बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोड का नहीं, हाँ, जिस आयंस का पोटेंशियल ज्यादा होगा लगेगा उसको वहां पहुंचने में, तो वो पहले क्यों पहुंचेगा? जिसको कम पोटेंशियल लगेगा वो पहले पहुंचेगा। तो अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल, आई टोल्ड यू व्हाट इज डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो क्या होता है पोटेंशियल डिस्चार्ज? डिफरेंशियल डिस्चार्ज होता क्या है? ग्रेटर तक, मैंने इसका कॉन्सिक्वेंस लिख दिया। इसका होता क्या है वो लिख देते हैं बच्चे। द आयन, द मिनिमम पोटेंशियल, minimum potential required to discharge in an ion at their respective electrode is called discharge potential।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको दे देता हूँ। डिस्चार्ज पोटेंशियल directly proportional to discharge potential directly proportional to charge density. चार्ज डेंसिटी, ये नोट करके रखना सब कुछ। ग्रेटर द चार्ज डिस्चार्ज पोटेंशियल, greater will be the charge density. If charge density of an ion is greater, it means its discharge potential will also be greater. For example, I am writing the discharge potential of few ions. तो कौन पहले जाएगा? ये who will reach the first, you can identify from this table. Potassium need more discharge potential compared to sodium, compared to calcium, compared to magnesium, compared to Al plus 3, compared to Zn plus 2, compared to Hn, compared to Cu plus 2 ion, compared to Hg plus 2 ion, and compared to Ag. और ये पॉजिटिव का हो गया, नेगेटिव का भी मेंशन कर देता हूँ। SO4 has the greatest charge density, discharge potential than NO3 negative, then OH negative, Cl negative, Br negative, and Phi negative. तो by this sequence बच्चों आपको देखना होगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन देना है। एक बार इसको नोट कर लो, 2 मिनट का आपको टाइम देना। आई एम गिविंग यू द 2 मिनट टाइम्स, प्लीज नोट डाउन द एंटायर दिस वन लेक्चर, दिस पॉइंट, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। And based on this information, I'll ask you कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, which one has the greatest discharge potential. सर आपने ये क्या लिखा है? डिस्चार्ज के बाद समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, डिस्चार्ज पोटेंशियल, आई एम राइटिंग हियर द डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग हो रहा है। एच का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, सीयू का कम है। तो पहले कौन जाके वहां पे रिलीज होगा? सीयू पहले होगा। उसकी लेसर द टेंडेंसी, ग्रेटर द डिस्चार्ज पोटेंशियल, आई हैव मेंशन हियर, lesser will the tendency to reach at their respective electrode. Write down this question. I will ask you the question, my dear.
Okay. Now, which one will discharge first at cathode? Lithium positive and second sodium positive. And why? Give me the answer in the chat box. Na. Na. And give me the reason also. Sonal, Bokhe, AD, EMRS, Pariksha, Patara. Please give me the explanation also. Very good, bachcho. But give me the explanation also. Give me the explanation also. Let's see. Its a size of lithium is small and size of sodium is greater. See here, more charge density means more water molecule will attract तो यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे. greater the number of greater the number of water molecule greater will be its hydrated radius. उसकी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ज्यादा होगी and larger the size difficult to migrate means difficult to migrate यहाँ पे क्या होगा लेसर चार्ज डेंसिटी
lesser charge density, less number of water molecules, less number of water molecule means less hydrated size, less hydrated means greater mobility, means easily can migrate. Got it? This is the basic concept behind the migration of ions. Yeah, who will discharge at first? Based on this information, now I'm asking you, which one had, which one will discharge first? Will discharge first? Hydrogen ion and sodium ion. And please this time substantiate your answer with the proper explanation. Kaveri, AD, can you substantiate your answer with the explanation? Let's see. Here the answer will be H positive. Although here there is a greater charge density. Although there is a greater charge density on H positive compared to Na positive, still it will migrate, still it will discharge first. It will discharge first. Why? हाँ, why देखते हैं.
H ion follow a unique path. The path was discovered by discovered by the path was discovered by Grothus and Roper. That's why it is called Grothus and Roper mechanism. Grothus and Roper mechanism. See, this is the electrode and this is the cathode, and on which hydrogen are planning to discharge. Suppose this is the hydrogen and this is the water molecule, and this water molecule is attached with the hydrogen bonding with a molecule of with another molecule, and this molecule also attached with the hydrogen bond of another. यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये अगर यहाँ डिस्चार्ज हो जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ प्योर बॉन्ड बना लेगा। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ प्योर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रोकन हो जाएगा। If this bond is broken, then its oxygen make the proper bond with this hydrogen. And in the same way, hydrogen didn't migrate here. Only through the transfer of H positive ion from one molecule to another molecule, it discharged at the cathode. That's why on being greater being having greater electron density, it will discharge first. Hope everyone go to this concept. Again, I am explaining. ये वाटर का मॉलिक्यूल्स ये यहाँ डिस्चार्ज हो गया, तो इसने दूसरे के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। If this hydrogen bond attach with this oxygen, then this bond become the hydrogen bond. It will break down, and this again this bond become the proper bond. इस तरीके से वो माइक चल के भी नहीं गया और वहां तक पहुंच भी गया। How many students got this concept of Grothus and Roper mechanism? तो वो मेरे को yes sir no sir लिख के भेजेंगे in chat box. Chat box. Please write down whether you got the concept or not. दोबारा बोलो।
अगेन चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो साइड से ले लेता हूं मैं। जैसे इन केस ऑफ लिथियम सोडियम, दे विल कैरी ए पॉजिटिव चार्ज और वे माइग्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेगा। यहाँ पे इसने कोई माइग्रेशन नहीं किया, नो माइग्रेशन, ओनली एच ट्रांसफर, ओनली एच पॉजिटिव ट्रांसफर फ्रॉम one molecule to another molecule. कोई ट्रांसफर नहीं हुआ बच्चे यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, तो ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया, ये टूटा, ये बन गया, फिर ये टूटा, तो ये फिर किसी हाइड्रोजन से ये बन जाएगा। तो इसको ऐसे फिजिकली माइग्रेट नहीं करना पड़ा। 1 पॉइंट और लिखा हियर, H positive does not move physically। ये फिजिकल इसने मूव नहीं किया। बाकी के केस में क्या करना पड़ता है बच्चे, वो आयंस ऐसे करके या ऐसे करके मूव करके जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई H positive has the greater migrating power than, अभी आया सोडियम आया, कुछ कुछ आया बच्चों, एक बार देख लेते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल। यस सर, नो सर, कुछ कैन एनीवन सेंड प्रगति हमारे निचार प्रगति माध्यम का तो बना के कर दो। someone might अभी कंजन थे रेशमा ध्रुव जयंती स्टूडेंट और कृपया परमादि खलपो तो थैली सोयो और Agasti, your mic is unmuted and you are discussing with someone. Okay, हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब कुछ इस पे क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोल्टन PbR2, एक साइड अखला रखी सर PbBr2 कैथोड पे, यहाँ पे कौन जाएगा, Pb+2 को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल गो टू द एनोड। 2Br नेगेटिव, 2Br negative will lose 2 electron and Br2 will collect over anode. So here remember Br2 at anode and Pb at cathode. Aqueous NaCl. This time aqueous NaCl is there, so in category of cathode there are two things at cathode, H positive and Na positive. I told you H positive will
get the electron and it release the H2S. Means HN will discharge first compared to Na. And at anode, Cl negative to Cl negative will reach and they form Cl2 plus 2. And at anode Cl2 will release. Remember this one again. I am telling you कि क्या हुआ यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, तो पार्टी कौन कौन है? पार्टी, suppose this is positive and this is negative. So on to reach the positive, to reach the negative, two parties there. One is H positive and N is positive. So here H positive will reach first, not Na positive. And two parties there, OCl negative and OH negative. Cl negative reach first, not OH negative. So that's why Cl2 is released. Next. Okay. Now, if someone asks you the question from the above question, if on passing electricity in the above electrolyte, if 2 liter of H2 formed at NTP, how many liter of O2 या Cl2 will produce? चलो जल्दी से tell me. Answer. If 2 liter of H2 is formed, a 2 liter of discharge at cathode, how many liter of CO2 will discharge at anode? Yes. Tell me the answer. Okay. To release one molecule of H2, only 2 electrons are required. And to release Cl2 of one molecule of Cl2,
Same time, two molecule of electron are two electron are required. It means answer 2 liter of Cl2 will be released. 2 liter of Cl2 will. Now, this is the second, third. Very dilute aqueous NaCl. Very dilute NaCl. एक मिनट बच्चों. Very dilute NaCl is electrolyte. See, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट and it's a negative plate, positive. Negative is called cathode and positive is called anode. Always we kept anode on the left hand side. Remember this point also. Now, here are the two parts, Na positive, H positive. So obviously H positive will reach first. Similarly, here also two party, OH negative and Cl negative. Discharge potential is very less for Cl negative, so it should be discharged first. But due to it's a very dilute means the number of OHR is very high. That's why OH will discharge first. So here, due to the high quantity of OH negative, it will discharge first. Got it? So what will be the product at cathode and anode? तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड पे 2H positive will get 2 electron and H2 gas will be released. At anode, what will happen? 2 OH negative will reach and they will form one molecule of water plus half O2 and plus lose 2 electrons. It means at anode, I will collect the O2 gas, half O2 gas. Because water तो यहाँ very dilute है, तो बहुत ज़्यादा quantity में होगा, तो वो और थोड़ा सा बन जाएगा, पर O2 gas will be released. Here for the same number of electron, ये one molecule बनता है, ये half molecule बनता है, तो I can write here for 1 liter of H2, half liter of
O2 will form. Now, NaCl using Hg electrode ये ज्यादा हो जाएगा aqueous CuSO4. Aqueous या पूरा ही करा देते बच्चों आप लोगों को भी, स्किप नहीं मारता बस. NaCl using Hg as cathode. मीन्स जो कैथोड है हमने इस बार मरकरी का लिया है. लेट्स सी दिस वन. This is the cathode. And this is the anode. Oh, उल्टा. चलो उल्टा लिख दिया, सीधा लिख दिया, ऐसे ही लगा देते हैं. Anode. It's a Hg cathode. देखते हैं कैथोड से कैसे होता है. Sodium react with mercury and it form sodium Hg, that is called sodium amalgam. Sodium amalgam. What will happen at cathode? तो here cathode पे जो मुझे मिला, तो ये मिला मुझे क्या, cathode. What I got at cathode, sodium amalgam. Initially I'll get the NaHg as NaHg sodium amalgam product at cathode. But later this NaHg react with water and release H2 gas. See, 2 molecule of sodium amalgam react with 2 molecule of water, and what they will do, 2 NaOH plus H2 gas release and plus 2 mercury atom will settle down. Hope you got it. At cathode, what will happen at anode here? The final product is same. Final product is H. And at anode, what will happen? 2 Cl negative goes to Cl2 plus 2. Same product. Same product. Now, again,
from aqueous CuSO4. What is the number 4? 5. Aqueous CuSO4. If in the container this is the cathode, anode, and aqueous Cu plus 2SO4. तो यहाँ पे वाटर भी रहेगा and OH negative will be there. Then which one has the higher discharge potential? Then at cathode, Cu plus 2 will gain the 2 electron and it will deposit in the form of C. And at anode, same thing will happen. Both sulfate and OH. Let's check which one has the higher discharge potential. SO4 has the higher discharge potential compared to OH. It will not discharge first. First will discharge the OH negative. So यहाँ पे what we'll see anode 2 OH means before OH before SO4 OH will go first. And it will create same H2O plus half O2 plus 2 electrons. So if they ask the question कि aqueous CuSO4 से कौन पहले होगा, तो aqueous CuSO4 में Cu पहले होगा कंपेयर टू H. और ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, कौन पहले होगा, Cu होगा या फर्स्ट H होगा. You can see from here also. Got it? Now it says 3, 4, 5. It is the turn to 6. And that is very important also. RCOO. Okay. Cathode. At cathode, RCOO negative plus H positive and OH negative also will be there. So hope at cathode 2H positive will gain 2 electrons and they will release H2S. What happened at anode? 2 molecule of RCOONA and they will release 2 RCOO free radical plus 2. यहाँ लूज किया, यहाँ गेन कर दिया. Now this 2 RCOO free radical is goes to 2 RCOO हो रहा है 2 R free radical plus 2 CO2. Further 2 R free radical goes to R free radical. So let's see. At cathode, 1 molecule of H2 is there.
after getting the 2 electron. 2 molecule of CO2 is there after releasing the 2 electron. And 1 molecule of RR is there. That means the ratio, the gas produced at cathode and get produced at anode, and gas produced at anode. There are 2 gases will be produced. It's a 2 CO2. It's a gas. So remember this one also. Remember this one also. This one gas will release in what amount? So ratio of 1 ratio 1:2:1. Remember this number also. कुछ आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? चलो एक इसको फिनिश ही कर देते हैं. नेक्स्ट है कितना पॉइंट था? 6 7. ये H2 CO2 and which one? H2 CO2 and RR. Next, 7th point. If we electrolyze the concentrated H2SO4, if we electrolyze the concentrated H2SO4, then there are 2 possibilities here. First is normal current density. I electrolyze with the H2SO4 with the normal current density current. And second, high current density current. High current density, high current density, that is sufficient. So normal current density, normal cathode. At cathode, you will collect the H2, and cathode, you will collect the O2. Got it? Here, high current density at cathode, two H positive, you will get the 2 electron and it will release the H2. Anode, HSO4 negative is there. Further, its molecule dimerize and it form H2H2O8 plus 2 electron. So hope you got the all information regarding last one more. This one is the 6th, 7th, 8th. Electrolysis of aqueous CuSO4 using
Cu electrode. This time I am analyzing the CuSO4 and the nature of the rod is Cu electrode. So let's see what will happen. This is the container. It's a cathode. And this is a anode. And this is a anode. What will happen here? This is the Cu plus 2. It will go to there. तो जो हमारा कैथोड है वो क्या होगा? Cu plus 2, 2 electron will gain. What will happen at anode? So Cu is Cu. This Cu will go to Cu plus 2 plus 2 electron. Nothing when we can do it here. तो यहाँ से ये यहाँ पे आएगा Cu plus 2. Total concentration of Cu plus 2 remain constant in solution. So today lecture is only for here. I told you so many techniques. If you need the result, if you need the not result, if you need the these notes, so what I have to do? I have to send myself and then I will send to you people. I have to wait. Okay. If anyone has doubt, he or she can ask. Otherwise, my class is over. I am planning to send these notes in your group. Clear? Okay, bye bye everyone. Stop share.